नमस्कार। माइंस एक्ट 1952 का वीडियो सीरीज में 8 नंबर वीडियो चैप्टर 8 लेकर के हम दोबारा हाजिर हुए। इस सेशन में आप सबको मैं रथिन विश्वास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर किरीबुरू की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जानते हैं चैप्टर 8 रेगुलेशन रूल्स एंड बायलॉज, जिसमें सेक्शन 57 टू 62 ये सेक्शंस है। इसको आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। इसका प्रीवियस चैप्टर चैप्टर 1 से लेकर 7 तक अलग अलग 7 वीडियोस में है। जो इस चैप्टर को नहीं जाने हैं, नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल में जा करके बाकी वीडियोस देख लें और उसको सैम्पल क्वेश्चन आंसर देख लें। बाकी दोनों चैप्टर भी हम लोग बाद में अपलोड करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 रेगुलेशन रूल एंड बायलॉज, सेक्शन 57 टू 62। 57 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन। Section 58 power of central government to make rules. Section 59 prior publication of regulations and rules. Section 60 power to make regulation without previous publications. Section 61 laying of regulations, rules and bylaws before Parliament. Section 62 posting of abstract from Act, Regulation etc. हम लोग एक एक करके सेक्शन डिटेल जानेंगे, जैसे कि आप लोग देखें। उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर करेंगे। सेक्शन 57 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन। The central government may, by notification in the official gazette, make regulation consist with this act for all or any of the following purpose. ये जो नीचे पर्पस दिया हुआ है, इस पर्पस में गवर्नमेंट रेगुलेशन बना सकते हैं। किस किस पर्पस में दिया हुआ है, ये अलग अलग इसमें क्लॉजेस में दिया हुआ है। ए prescribing the qualification required for appointment as chief inspector और इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का जो क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है। For prescribing and regulating the duties and powers of the chief inspector and of inspectors in regard to the inspection of the mines under this act. चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन ए में दिया हुआ है, बी में है उनका ड्यूटीज एंड पावर। सी prescribing the duties of owner, agent and manager of mine and persons acting under them, and for prescribing the qualification including age of agents and managers of mine and persons acting under them. ओनर, एजेंट और मैनेजर का ड्यूटीज के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, और एजेंट्स, मैनेजर और अदर पर्सन्स जो रहेंगे माइंस में, उनका जो क्वालिफिकेशन, एज और ड्यूटीज के बारे में भी इसमें रेगुलेशंस ला सकते हैं। For requiring facilities to be provided for enabling managers of mine and other persons acting under them to effectively discharge their duty. मैनेजर और बाकी पर्सन्स जो माइंस में करेंगे, उन काम करेंगे, उनके लिए क्या फैसिलिटीज चाहिए, उसके बारे में भी डिटेलिंग करने के लिए रेगुलेशन ला सकते हैं। फॉर रेगुलेटिंग द मैनेजर of ascertaining by examination or otherwise the qualification of manager of a mine and persons acting under them, and the granting and renewal of certificate of competency.
मैनेजर और अदर्स पर्सन्स का क्वालिफिकेशन, उनका एग्जामिनेशन प्रोसेस और उनका सर्टिफिकेशन रिन्यूअल प्रोसेस, इसके बारे में भी बता सकते हैं। फॉर फिक्सिंग द फीस इन एनी टू पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सब एग्जामिनेशन एंड ऑफ ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ सच सर्टिफिकेशन। ये जो सर्टिफिकेशन जिसमें मैनेजर्स एग्जाम्स, फोरमैन, मैनेजमेंट एग्जाम्स होता है, इस एग्जाम्स के फीस भी इस रेगुलेशन में डिफाइन किया जा सकता है। जी, फॉर डिटर्मिनिंग द सर्कमस्टेंस इन व्हिच and the condition in respect to which it shall be lawful for more mines than one to be under single manager, or for any mine or mines to be under a manager not having prescribed qualification। तो एक से ज़्यादा माइंस एक मैनेजर के अंडर में लाना, या माइंस मैनेजर का जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो नहीं हो सकता, ऐसे कोई कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस अगर आता है, वो भी इस रेगुलेशन में डिटेलिंग हो सकता है। फॉर प्रोवाइडिंग for inquiries to be made under this, including any inquiry related to misconduct or incompetence on part of any persons holding a certificate under this act, and for suspension or cancellation for any such certificate, and for providing wherever necessary that the persons appointed to hold an inquiry shall have all the powers of civil court under the Code of Civil Procedure 1908 for the purpose of enforcing the attendance of witness and compelling the production of documents and material objects। अ, इस सर्टिफिकेशन में अगर मिसकॉन्डक्ट होता है तो उसका इंक्वायरीज का प्रोविजन, एंड जो इंक्वायरी ऑफिसर है उनको सिविल कोर्ट की पावर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 एक्ट के अंडर ये भी दिया जाने के लिए रेगुलेशन हो सकता है। फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू प्रोविजंस of the Indian Explosives Act 1884 and any rules made thereunder, the strong convenience and use of explosives, एक्सप्लोसिव यूज करने के लिए जो एक्सप्लोसिव्स इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 और इसका अंडर में जो रूल्स है, इसके अंदर जो रूल्स उसको रेगुलेट करने के लिए और एक्सप्लोसिव्स कंप्लीट यूज करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग रिस्ट्रक्चरिंग और रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन माइन or any class of mine of particular kind of labor which are attended by danger to the life, safety or health of such persons, for limiting the weight of any single load that may be carried by any such person। वुमेन एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन रिस्ट्रिक्शंस करने के लिए भी ये रेगुलेशन हो सकता है, और अदर वेट के रिलेटेड भी रेगुलेट करने के लिए। फॉर प्रोवाइडिंग द सेफ्टी ऑफ अ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइन, देयर मीन्स ऑफ एंट्रेंस thereinto and exit therefrom, the number of shafts or outlet to be furnished, and the fence of shaft, pit, outlets, pathway and subsidiaries। इसके लिए भी लोगों को एंट्रीज, एग्जिट का प्रोविजंस, shaft outlets इसका प्रोविजन, फेंसिंग, shaft, speed, outlets, pit, pathway, subsidence एरिया में फेंसिंग करना, ये प्रोविजंस। for providing the employment of a minor either as manager or any other specific capacity for any persons except the person paid by the owner of the mine and directly answerable to owner or manager of the mine। prescribes जो क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक कैपेसिटी पे जो पर्सन है वो ओनर के अंडर में ही एम्प्लॉयमेंट हो, और जो मैनेजर के ऊपर, ओनर एंड मैनेजर के ऊपर आंसरेबल हो, ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट करना है, अदरवाइज ये एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड करना है। इसके लिए रेगुलेशंस ला सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग द सेफ्टी of roads and working place in mine, including seating, maintenance and extraction
or reduction of pillars, blocks of minerals, and the maintenance of sufficient barrier between my mine and mine. अ, इसमें बैरियर देना, सेफ्टी प्रोवाइड करना प्लेस में, ये सारे के ऊपर भी रेगुलेशन ला सकते हैं। पर द इंस्पेक्शन ऑफ वर्किंग एंड सील ऑफ फायर एरियाज इन माइन एंड फॉर द restriction of working in vicinity of sea or lake, river or any other body of surface water, whether natural or artificial, or any public road building for requiring due protection to be taken against the eruption or inrush of water or other matter into outbreak of fire in or premature collapse of any working. वाटर फायर से डेंजर के लिए भी जो प्रिकॉशंस लेना है, इसके लिए भी रेगुलेशन ला सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग द वेंटिलेशन ऑफ माइन एंड एक्शन टू बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ डस्ट, फायर, इन्फ्लेमेबल and noxious gas, including precautions against spontaneous combustion, underground fire, and coal dust. वेंटिलेशंस के ऊपर, डस्ट फायर के प्रिकॉशंस, इन्फ्लेमेबल नॉक्सियस गैस के ऊपर प्रिकॉशंस लेने के लिए भी रेगुलेशन ला सकते हैं। For regulating subject the provision of Indian Electricity Act 1910 and any rules made thereunder, generation, storage, transmission and use of electricity in mines, and for providing for the care and the regulation of the use of all electrical apparatus and electrical cables in mine and of all other machinery and plant thereof. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स बना हुआ है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन के लिए भी ये रेगुलेशन ला सकता है। फॉर रेगुलेटिंग द यूज ऑफ मशीनरी इन माइन, for providing the safety of persons employed on or near such machine and on haulage road, and for restructuring the use of certain class of locomotives underground, ये सारे मशीनरीज यूज के लिए भी रेगुलेशन ला सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग proper lighting in mine and regulating the use of safety lamps therein, and for search of persons entering a mine इन हुई सेफ्टी लैम्प्स आर इन यूज। सेफ्टी लैम्प्स के बारे में, प्रॉपर लाइटिंग और सेफ्टी लैम्प्स के बारे में भी रेगुलेशन ला सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग अगेंस्ट एक्सप्लोशन or ignition of inflammable gas or dust or eruption or accumulation of water in mine, or against danger arising therefrom, and provision of restructuring, regulating of extraction of minerals in circumstances like that to results in the premature collapse of working, to results in or to aggravate collapse of working or eruption of water or ignitions in mine. एक्सप्लोशन और इग्निशन, इन्फ्लेमेबल गैस, डस्ट, eruptions के लिए भी रेगुलेशन ला सकते हैं। फॉर प्रिस्क्राइबिंग अंडर क्लॉज जी of subsection 1 and 2 the type of accident and prescribing the notice of accidents and dangerous occurrence in that notice, report and returns of mineral output, persons employed and other matter provided for by regulations to be furnished by owner, agent and manager of mine, and for prescribing the forms of such notice, return and reports, the persons and authorities to whom they are to be furnished, the particulars to be contained in them, and the time when which they are to be submitted. एक्सीडेंट रिलेटेड, एक्सीडेंट होने में किसको भेजना है, कहाँ भेजना है रिपोर्ट, कौन भेजेगा रिपोर्ट, कब तक भेजेगा रिपोर्ट, ये सारे के बारे में भी रेगुलेशन ला सकते हैं। फॉर रिक्वायरिंग owner, agent and manager of a mine have fixed boundaries of the mine, for prescribing the plans and section and field notes concerned with therewith to be kept by them and the manager, and place in which such plan, section, field notes are to be kept for purpose of record
for the submission of copies thereof to the chief inspector and requiring to make fresh survey and plans by them in the event of non-compliance, for having the survey made and plans prepared through and other agency for recovery of expenses thereof in the same manner as an area of land revenue। इसका रिक्वायर्ड जो प्लान सेक्शंस हैं उसके लिए भी ये रेगुलेशन ला सकता है। For regulating the procedures of occurrence of accident or accidental explosion or ignition in or about mine, for dealing effectively with the situation। एक्सीडेंटल एक्सीडेंट और एक्सप्लोशंस इग्निशंस के रेगुलेटिंग करने के लिए भी रेगुलेशन ला सकते हैं। फॉर प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ एंड particulars to be contained in the notice to be given by the owner, agent or manager and of the mine under section 16। सेक्शन 16 की जो नोटिस देना है उसके लिए भी प्रिस्क्राइब फॉर्म लाने के लिए भी रेगुलेशन ला सकते हैं। फॉर प्रिस्क्राइबिंग द नोटिस टू बी गिवन बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर of mine before mining operation or commencement and extend to any point of 45 meters of railway subject to provision of the Indian Railway Act, of any public road or other works as the case may be, which are maintained by the government or any local authority। माइन ऑपरेशन शुरू होने से पहले जो नोटिस देना है सभी फॉर्म उनमें देना होता है, इसके लिए भी रेगुलेशंस ला सकते हैं। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजुरी in respect of any mine where working or discontinuity proprietary vested in the government or any local authority or railway company as defined in Indian Railways Act 1890। इसके लिए भी ला सकते हैं। For requiring protective works to be constructed by owner, agent, manager or any mine in before the mine is closed, एंड क्लोज करने से पहले जो प्रोटेक्टिव काम करना है वो भी के लिए रेगुलेशंस ला सकते हैं। इन इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस फॉर गेटिंग सच वर्क एग्जीक्यूटेड बाय any other agency and for recovering the expense thereof from such owner in the same manner as an area of land revenue, for providing for appointment of court of inquiry under query, incline, shaft pit or outlet, whether the same is being walked or not, or any dangerous or prohibited area, subsidence, haulage, tramline, pathway, where such fencing is necessary for the protection of public and any other matter which has to be or may be prescribed। इन सभी कारण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन ला सकते हैं और पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को 57 नंबर सेक्शंस के तहत दे रखा है। सेक्शन 58 सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification in official gazette make rule consistent with this act for any for all or any of the following purpose namely 57 में जैसे रेगुलेशन बना सकते हैं 58 का हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट रूल भी बना सकते हैं। किस किस पर्पस के लिए रूल बना सकते हैं वो हम लोग एक बार देखें। फॉर प्रोवाइडिंग द टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड द मैनर of filling vacancy among the members of committee and for regulating the procedures to be followed by the committee for transacting its business। जो कमिटी सेक्शन 12 में है उस कमिटी के डिटेलिंग करने के लिए रूल बना सकते हैं। फॉर प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ द रजिस्टर रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 23, जो अटेंडेंस रजिस्टर्स है इन सब के बारे में भी रूल बना सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 24 regulating the procedures and power of such court for payment
of travel allowance to the member and for the recovery of expenses for such court including any other expense connected with the inquiry in the same manner as an area of land revenue from manager, owner or agent of mine concerned. ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो सेक्शन 24 के अंडर अगर करना है तो उसी का ऊपर भी ये रूल बना सकते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कैसे अपॉइंट होगा, उनका रेगुलेटिंग प्रोसीड्यूर्स, पेमेंट ऑफ ट्रैवल अलाउंस एंड अदर एक्सपेंसेस, इसके बारे में भी ये रूल डीलिंग हो सकता है। फॉर प्रोवाइडिंग द इंस्पेक्शन of mine to be carried out on behalf of the persons employed therein by a technical expert, not less than overman in statute. The facilities, therefore, the frequency at which the manner in which such inspection are to be carried out and manner in which report of such inspection are to be made. अगर कोई माइंस में इंस्पेक्शन होता है टेक्निकल एक्सपर्ट द्वारा तो उसके भी डिटेलिंग इस रूल में होना है। For recurring the maintenance of mine therein any woman employed and whether employed on any day of preceding 12 months, a suitable room to be reserved for use of children under age of 6 years belonging to such women and for prescribing either generally or in particular reference with the number of women employed in mine under the number of standards of such room and nature or extent of amenities to be provided and supervision to be exercised therein. जो क्रेस रूल है उसी के बारे में इस क्लॉज डी में बता रहे हैं। 6 इयर्स की स्मॉल बेबी अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय का हो तो उनको कहाँ पे कैसे रखेंगे, उनके लिए जो अलग व्यवस्था किया जाता है उसके बारे में भी रूल बना सकते हैं। इसमें बना हुआ है जैसे हमारा क्रेस रूल, पाइन क्रेस रूल जो बना हुआ है इसी क्लॉज के अंदर बना हुआ है। For requiring the maintenance at or near pithead of bathing place equipped with shower bath and locker rooms for use of men employee in mines and similar and separate place and room for use of women in mines where women are employed and for prescribing either generally or in particular reference to the number of men and women ordinarily employed in mine, the number and standard of such places and room। ये जो पीठेद बाथरूम, पीठेद बाथ पोजिशंस बनाना है, पीठेद बाथ रूल्स जो बना हुआ है इसी क्लॉज के अंडर ही बना हुआ है। फॉर प्रिस्क्राइबिंग द स्टैंडर्ड of sanitization to be maintained and the scale of latrine and urinal accommodation to be provided mines. These provisions to be made for supply of drinking water, sanitation, latrine urinal का नंबर कितना रहेगा, कहाँ से बनेगा इसके ऊपर और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज के प्रोविजंस के ऊपर भी रूल बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। For providing supply and maintenance of medical appliance and comfort and for prescribing the contents and number of first aid box and cupboards, the training of first aid work, the size, equipment of first aid room, and the staff in charge thereof, and the arrangement for convenience of injured persons to hospital or dispensaries. मेडिकल अप्लायंसेस के बारे में भी रूल बना सकते हैं। फॉर रिक्वायरिंग द इम्पोर्टिंग प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन टू और the training of persons employed to be employed in mine otherwise than in position of such instructions and training। ये माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल इसी
क्लॉज में ही बना हुआ है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड द पर्सन्स एम्प्लॉयड टू बी माइंस के लिए जो ट्रेनिंग का व्यवस्था किया जाता है, बेसिक और रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ये सारे ट्रेनिंग के बाद भी रूल में जो बनाना है, ये भी एफ 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 जो क्लॉज है इसमें डिटेलिंग किया हुआ है। फॉर प्रोवाइडिंग द पर्सन्स और consumption of intoxication drinking or drugs in a mine and entry or presence therein any person in drunken state ड्रिंक्स एंड इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स ड्रग्स, इसके ऊपर बचने के लिए भी प्रोविशंस जो है ये रख सकते हैं। और पर्सन ड्रैंकिंग स्टेट में होने से क्या करना है इसको भी रूल में बता सकते हैं। फॉर प्रिस्क्राइबिंग फॉर्म एंड नोटिस रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 36 सच नोटिस टू बी पोस्टेड ऑल्सो इन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये जो नोटिस है सेक्शन 36 में, इसके बारे में भी रूल बना सकते हैं। फॉर डिफाइनिंग द पर्सन्स हु शैल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 37 बी डीम्ड टू बी persons holding positions of supervision of management employed in a confidential capacity, इसके बारे में भी रूल बना सकते हैं। For prohibiting employment in mines of persons or a class of persons who have not been certified by qualified medical practitioner to have completed their 15 years, and for prescribing the manner and circumstances in which such certificate may be granted or revoked. For requiring persons employed or seeking employment at mine to submit themselves for medical examination, and for prohibiting on medical ground the employment of any person at a mine either absolutely or in a particular capacity or in particular work। ये जो एम्प्लॉयमेंट सेकिंग नए रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो मेडिकल होना है, उस मेडिकल्स के बारे में भी रूल बना सकते हैं। फॉर प्रिस्क्राइबिंग फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 48 एंड मेंटेनेंस एंड फॉर और रेगुलेशन फॉर पर्पस ऑफ सेक्टर 7, चैप्टर 7 के लिए भी जो रजिस्टर्ड या फॉर्म्स मेंटेनेंस करना है या रेगुलेशंस बनाना है, ये भी कर सकते हैं। फॉर प्रिस्क्राइबिंग द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस एक्ट and of regulation and rule, and the language which abstract and bylaws shall be posted as required by section 61 and 62, इसके भी डिटेलिंग रूल में कर सकते हैं। For requiring notice return reports in connection with any matter dealt with by rules to be furnished by owner, agent, and manager of mine, and for prescribe the forms of such notice, return, and reports, the persons and authority to whom they are to be furnished, the particulars of content in them, and the time in which they are to be submitted। जो नोटिस रिटर्न रिपोर्ट्स जो कंसर्न है इस माइंस एक्ट के अंदर, उसके बारे में भी, उसको भी ओनर एजेंट मैनेजर द्वारा इसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में भरना है। नेक्स्ट, for requiring the provision and maintenance of mine, there are more than 50 persons are ordinary employed of adequate and suitable shelters for taking food with provisions of drinking water। इसके बारे में 50 लोगों से ज़्यादा अगर ऑर्डिनरी माइंस में काम करते हैं तो उनके लिए भी जो शेल्टर चाहिए, शेल्टर ये भी
इसके लिए भी रूल बना सकते हैं। For requiring the provision and maintenance of any mine specified in this behalf by the Chief Inspector or Inspector, wherein more than 250 persons are ordinary employment, a canteen or canteens for the use of such persons. ये कैंटीन्स का प्रोविजंस के लिए भी हम लोग को ये जो रूल्स बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी एक प्रोविजंस दिया हुआ है कैंटीन फैसिलिटी जहाँ पे 250% से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो भी बना सकते हैं। For requiring the employment of every mind where 500 or more persons are ordinarily employed of such number of welfare officer as may be prescribed, for prescribing the qualification and the terms of condition of and duties to be performed by such welfare officer। welfare officers का रिक्रूटमेंट जहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर और कितना नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर चाहिए, इसके बारे में भी ये रूल और डिटेलिंग कर सकते हैं। Requiring the establishment for rescue stations for specified mines or group of specified mines for all mines in a specified area and prescribed how and by whom such station shall be established। रेस्क्यू स्टेशंस के लिए जो रेस्क्यू रूल है इसके बारे में भी यहाँ पे बताया क्लॉज आर में। जो रेस्क्यू स्टेशन है उसमें कौन सा ग्रुप ऑफ माइंस के लिए चाहिए, कहाँ पे चाहिए, इसके भी डिटेलिंग रूल में हो सकता है। फॉर प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशंस, फॉर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड अदर क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग रेस्क्यू ब्रिगेड्स। जो रेस्क्यू और टीम के बारे में जो रेस्क्यू मैनेजमेंट है, रेस्क्यूज के बारे में जो फिजिकल फिटनेस, इसके ऊपर भी रूल में जनरल गाइडलाइन आ सकता है। डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द रेस्क्यू ब्रिगेड। रेस्क्यू ब्रिगेड्स की जो पर्सन्स रहेंगे उनका रेसिडेंस प्लेस कहाँ रहेगा। For prescribing the position, equipment, control and maintenance and functions of rescue stations। rescue station के बाकी डिटेलिंग इस रूल में हो सकता है। For providing levy and collection of duty of exercise at a rate exceeding 25 paisa per ton on coke and coal production in dispatch from the mine specified under clause R of certain on the creation of rescue station found for such mine, the creation to such fund of such sum of money as central government may, after due appropriation made by parliament by law in this behalf, provide from out of proceeds of such cess credited to the consolidated fund of India, the manner in which the money of such fund shall be utilized and the administration of such fund exercise or कोई ड्यूज कोल प्रोडक्शन या अदर्स के लिए 25 पैसा पर टन के हिसाब से कलेक्ट करके और उस फंड को कैसे मैनेज करना है, ये भी इसके लिए भी रूल बना सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द फॉर्मेशन, training, completion and duties, rescue breeds and generally for the conduct of rescue work in mine। ये जो रेस्क्यू ग्रेड है, इस रेस्क्यू ग्रेड के बारे में भी उनका कंपोजिशन, ट्रेनिंग, फॉर्मेशन एंड जनरल ड्यूटीज, इसके बारे में भी डीलिंग कर सकता है। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द constitution of safety committees for specified mines or group of specified mines or for all mine in a specified area for promoting safety and for laying down the competition manner of formation and functions of such safety committee and अगर सेफ्टी कमिटीज के बारे में भी डीलिंग हो सकता है रूल में। जनरली टू प्रोवाइड फॉर एनी मैटर नॉट प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और गाइडलाइन
or the regulations, provisions, or who is required in order to be given effect to this act। और एक्ट के अगेंस्ट में कोई रेगुलेशन नहीं है, उसने मैटर आ जाता है नोटिस में, उसके बारे में भी रूल ला सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज में रूल्स ला सकते हैं जो सेक्शन 58 में बताया है। सेक्शन 57 में रेगुलेशन ला सकता है, 58 में रूल ला सकता है। जैसे कि हम लोग देखे हैं इस 57 58 में जो रेगुलेशन या रूल लाना है इसको प्रायर पब्लिश करना है, तो इसलिए इस सेक्शन 59 में है प्रायर पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशंस एंड रूल्स। The power to make regulations and rule conferred by section 57 and 58 is subject to the condition of the regulations and rules being made after previous publication। रूल रेगुलेशन जो है ये प्रीवियसली इसको पब्लिकेशन करने के बाद तभी ये बनेगा। The date to be specified in accordance with clause 3 of section 23 of the Central Clauses Act 1897 as that after which a draft of regulations or rule proposed to be made will be taken under consideration shall not be less than 3 months from the date on which the draft of the proposed regulation and rule published for general information। तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस जो पब्लिश होगा उसको 3 महीने उसके लिए टाइम देना जाएगा। No regulation or rule shall be made unless the draft thereof has been referred to the committee constituted under subsection 1 of section 12, unless that committee has had reasonable opportunity of reporting as the expenditure for of making the same and as the suitable of its provision। Regulation and rule shall be published in official gazette and on such publication shall be effect as with enacted in this act। The provision of subsection 1, 2 and 4 shall not apply to first occurrence on which rules referred in the clause D or clause E of section 58 are made। Section 60, the normal case रेगुलेशन या रूल पब्लिश होगा, देन उसका कंसर्न जाएगा, उसके बाद ये रूल रेगुलेशन बनेगा। बट विदाउट प्रीवियस पब्लिकेशंस, अगर इमरजेंसी है प्रीवियस पब्लिकेशंस का 3 मंथ्स का टाइम नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंडीशन contained in subsection 1, 2 and 4 of section 59, regulations under section 57 may be made without previous publications and without reference to the committee constituted under subsection 1 of section 12 of the central government is satisfied that for prevention of apprehended danger to the speedy remedy conditions likely to cause danger, it is necessary in making of such regulations to dispense with delay that would result from such provisions and reference। जो रेगुलेशन 58 में बना है या सबसेक्शन 1, 2 एंड 4 ऑफ सेक्शन 59 में जो है, इसको हम लोग प्रायर परमिशंस जो करना है और साथ साथ इसको जो कमिटी है, जो कमिटी सेक्शन 12 के अंडर में बना हुआ है सबसेक्शन 1 में, उस कमिटी को भी इसके बारे में दिखाना है। प्रोवाइडेड दैट एनी रेगुलेशन सो मेड shall be sent to the said committee for information
and shall not remain in force for more than 1 year from making thereof. In general, ये जो रेगुलेशंस जो बिना पब्लिकेशन करके जो रेगुलेशंस बनाता है, ये रेगुलेशन 1 साल तक जो वर्किंग पर्सन्स हैं, जो रेगुलेशंस बना रहे हैं, जिसके लिए इमीडिएट रेफरेंस के लिए विदाउट पब्लिकेशंस में ये रेगुलेशन 1 साल से ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा, 1 साल तक ही वैलिड रहेगा. The owner, agent, or manager of a mine may and shall, if called upon to do so by the chief inspector or inspector, frame and submit to the chief inspector or inspector a draft such bylaws not being consistent with the act or any regulation or rules for the time being in force governing the use of any particular machinery or such adoption of a particular method of working of the mine as the owner or agent or manager may deemed necessary to prevent accident and provide for safety, convenience, and display of the persons employed in the mine. In any such owner or agent manager failed to submit within 2 months a draft bylaws after being called upon to do so by the chief inspector or inspector, or submit a draft bylaws which is not, in the opinion of chief inspector or inspectors, sufficient, the chief inspector or inspector may propose a draft such bylaws as appear to him to be sufficient, or propose such arrangement in any draft submit to him by the owner, agent, or manager as will, in his opinion, render it sufficient, and shall send such draft or bylaws or draft amendment to the owner, agent, or manager as the case may be for consideration. If within a period of 2 months from the date on which any draft bylaws or draft amendment are sent by the chief inspector or inspector to the owner, agent, or manager under the provisions of subsection 2, the chief inspector or inspector and the owner, agent, or manager are unable to agree as the terms of the bylaws to made under subsection on, the chief inspector or inspector shall refer in the draft bylaws for settlement of the committee constituted under subsection on of section 12. When such draft bylaws have been agreed by the owner, agent, or manager and the chief inspector or inspector, or which they are unable to agree have been settled by the committee constituted under subsection 1 of section 12, a copy of draft bylaws shall be sent by the chief inspector or inspector to central government for approval. The central government may make some modification of draft bylaws as it think fit. Bokaro, sorry, before the central government approves the draft bylaws, whether with or without modification, there shall be published in such manner as the central government may think best adopted for informing the persons affected notice to the proposal to make the bylaws and of the place where copies of draft bylaws may be obtained and the time, which shall not be less than 30 days, within which any objection with reference to the draft bylaws made by or on behalf of persons affected should be sent in writing and shall state every objection
shall be in writing and shall state the specified ground on objection and omission, addition, or modification asked for. The central government shall consider any objection made within the required time by or on behalf of persons appearing to it to be affected and may approve the bylaws either in form of which they are published or after making amendments thereunto as think fit. The bylaws, when so approved by central government, shall have effect as if enacted in this act, and the owner, agent, or manager of the mine shall cause a copy of the bylaws in English and in such other languages or languages as may be prescribed to be posted in some conspicuous place at or near the mine where the bylaws may be confidently read or seen by the persons employed as often as same become defaced, obligatory, or destroyed, shall cause them to be renewed with all reasonable dispatch. The central government may order in writing, rescind the whole or part any bylaws so made, and thereupon such bylaws shall cease to have effect accordingly. Section 60 on A. So, laying up regulations or bylaws before Parliament. Every regulation made under 57, every rule made under 58, and every bylaws made under 61D shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament. While it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if before the expiry of the session aforesaid both houses agreed in making any modification in the regulation, rule, or bylaws should not be made. The regulation, rule, or bylaws shall thereafter have effect only in such modification form or be of no effect as the case may be. So, however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything prescribed done under the regulation, rule or bylaws as case may be. सर्टेन केस में ये जो रूल रेगुलेशन है ये पार्लियामेंट का बोथ हाउस जिसमें इसको ले करना है. Then 62 posting of abstract from act regulation etc. There shall be kept posted up at or near every mine in English and in such other languages or languages as may be prescribed. The prescribed abstracts of the act and of the regulation and rules. सो हम लोग इसका डिफरेंट सेक्शंस देख लिए. अब इसका कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं. द डैश में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रेगुलेशन कंसिस्ट with the Mines Act. Central government, concerned state government, DGMS or committee constitute under section 2. The correct answer is central government. Next question. The dash may by notification in official gazette make rule consistent with the Mines Act 1952. Central government, concerned state government, DGMS committee constitute under section 12. This rule also be made by central government. Next, under which section the Mines Act central government may make regulation? Section
57 is the correct answer. Under which section the Mines Act, the central government make the mine rule? It's section 58. Any regulation made without previous publication shall not remain in force for more than dash from the making thereof. For more than 1 year, 1 month, 6 months, 2 years, 1 year. Next, prescribe abstract in the Act, regulation, and rules shall be kept posted upon, at, or near every mine in English only, Hindi only, in such other languages as may be prescribed. Option A and C. The correct answer is option A and C. English in such other languages may be prescribed. थैंक यू. आप इस सीरीज की 8th वीडियो देखे हैं. हमारा लास्ट 2 वीडियो भी हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे. उम्मीद करते हैं ये आपका स्टडी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा. थैंक यू.